आपको इतने सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमाल का है और आप हमेशा सरप्राइज करते हैं। सिंपल सी चीज है कि मैं अच्छे इंसानों के साथ काम करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, दैट्स इट, आई गो ahead with it. It's got like a very North Indian tadka as well. How do you blend the two sensibilities? I think I've been blessed to have the best of both worlds. I grew up in Mumbai, so I was exposed to several cultures growing up. So it was, and at home I was raised as a Tamilian. I used to watch Tamil films with my mom, Malayalam films with my dad. I used to watch, Marathi films, Gujarati films. I had that sort of exposure growing up. Many times I think that the stars, the Bollywood, I think it is also used as a distraction, ये especially तो media. वो दो बड़ी चीजें हैं हमारे देश में। आप पहले ही भूल चुके हो, क्रिकेट और सिनेमा। ये सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा दिखता है। और इसके बारे में लोगों को बात करके अच्छा लगता है। जैसे आपके साथ अभी इंटरव्यू हो रहा है, पहली बार जूम पे आपके साथ हो रहा है। नॉर्मली आप सामने होते हैं हमारे। और मुझे हमेशा लगता है कि ये जो दीवार होती है उससे वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती, लेकिन आपके साथ नहीं पता चल रहा कि वो अभी भी ऐसा लग रहा है हम आमने सामने बात कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन या कैसे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। पहली बार मेरी कोई फिल्म इंडिया के बाहर शूट हुई है। जैसे मैं पहली बार बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं आज तक हरिद्वार के आगे गया नहीं शूट करने यूपी नॉर्थ इंडिया के। सो दिस वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी आल्सो टू डू अ फिल्म लाइक दिस। हम सब फर्स्ट टाइमर है इसके अंदर। Sorry, first. फर्स्ट No, टाइम I, राइटर, I, फर्स्ट I, टाइम डायरेक्टर, मैं फर्स्ट टाइमर एक्शन, और आनंद सर के लिए फर्स्ट टाइम एक्शन। वी ऑल डेब्यूटेंट्स इन दिस वन। आपने कहा कि दैट वो बैटमैन के साथ में जोकर का होना बहुत जरूरी है। वो केमिस्ट्री जो है, आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल टू द फिल्म। जयदीप अलावत की कास्टिंग जो है हुआ ये था कि जब रेशन में सुन रहा था आई कुड ओनली इमेजिन। और ये हुआ था कि ही वाज नॉट अवेलेबल आफ्टर पाताल लोक, ही वाज वेरी बिजी। तो मैंने बोला कि मैं वेट कर लूंगा, मैं डेट्स एडजस्ट कर लूंगा। आई वांट जयदीप अलावत इन द फिल्म, आई कैन नॉट सी एनीवन एल्स। Who's your all-time favorite action hero in India? And apparently Akshay sir is there in the film as well. ये एक देखते हैं पिक्चर देखकर बात करते हैं। How difficult is it playing an actor in a film? Being somebody else is a lot of fun as an actor. Doing a dance film is an option for you now? पहली बार मुझे रिहर्स करने का मौका मिला है इन एन एक्शन हीरो। नहीं तो मैं हमेशा 2 दिन या 1 दिन की रिहर्सल्स में कर लेता था। बट जब से पता चला नोरा फतेही साथ में करने वाली है डांस, तो आई टुक माय गुड 7 days टू रिहर्स। Writing a film or directing a film, which one do you think will come first? I think directing a film or producing a film to begin. I think he'll be a great director also. Yeah, I think so. So guys, thank you first of all for your time. And आयुष्मान, मेरा पहले आपसे सवाल ये होगा कि आपको इतने सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमाल का है और आप हमेशा सरप्राइज करते हैं। आप डिसाइफर कैसे करते हैं कि दैट that this is like a genuine sort of observation and with more substance to it and not merely like a rhetorical statement, because everyone associates this with you now. ये डिसाइड करना ऑफ कोर्स आप अपनी इंट्यूशन से ही जा सकते हैं, और अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइड करते हैं कि क्या कितना रेजोनेट करता है। एट द सेम टाइम कभी कभी जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, आनंद राय सर से मेरा एक 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 लगाव है। अनिरुद्ध को मैं शुभ मंगल सावधान से जानता हूँ। तो एक एक एसोसिएशन हो जाती है। मुझसे व्हेनेवर आई क्रिएटिवली एसोसिएट विद माय सेल्फ और कोलैबोरेट विद समवन, तो उस इंसान को जानना, उसकी कोर समझना बहुत जरूरी है। अगर वो मेरे समझ में आती है या कुछ सेम्बलेंस होती है मेरी कोर और उनकी कोर में, सो सो वी गो अहेड विद इट। तो एक सिंपल सी चीज है कि मैं अच्छे इंसानों के साथ काम करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, दैट्स इट, आई गो अहेड विद इट। Anirudh, you're from Tamil Nadu? No, I'm from Mumbai only. But he's a Tamil. But I'm a Tamil. Yeah. All right. Mother tongue is Tamil. So how do you just blend the two sensibilities? Because I think Tamilians, for example, they have an amazing command over especially the technique, and they're completely, I think, cinema lovers to the next level. And what we see in the promo so far, it's got like a very North Indian tadka as well. How do you blend the two sensibilities? I think I've been blessed to have the best of both worlds. I grew up in Mumbai, so I was exposed to several cultures growing up. So it was, and at home I was raised as a Tamilian. So the exposure in terms of the kind of cinemas I've watched over the years. I used to watch Tamil films with my mom, Malayalam films with my dad. I used to watch, Marathi films, Gujarati films. I had that sort of exposure growing up. So that has really come in handy now, when I think about it. So that really helps me. And plus, spending about 10 years with Anand sir has also given a lot of, given me a lot of understanding of, how Hindi cinema also works. Absolutely. Okay, now Ayushman,
I just read out a couple of dialogues from the promo. लड़ना मेरा काम है शौक नहीं, एंड कल पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई थी मेरी मेरी फोटो खींचने के लिए, और आज मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। ना कल मैं किसी को जानता था, ना आज मैं किसी को जानता हूँ। When you hear them at the first instance, you feel like these are like regular statements, but they are having layered meaning to it. Both the statements. Do you enjoy this sort of writing? You know, when you get something which is having something that can have like a larger connotation, especially लड़ना मेरा काम है शौक नहीं. This is a beautiful, I think, statement in a way. This is the first time playing an action superstar in the film. Hmm. एंड ऑफ कोर्स कोई भी अगर एक्टर है उसका शौक ये लड़ना हो नहीं सकता, नहीं तो वो Hmm. फाइटर होता, एमएमए फाइटर होता, एक्शन हीरो नहीं होता। Hmm. एट द सेम टाइम ये पिक्चर लेयर्ड भी है, क्योंकि इसमें फिल्म के अंदर फिल्म शूट भी हो रही है एक तरीके से। दो तरह के पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव है, पब्लिक का पर्सपेक्टिव, मल्टी पर्सपेक्टिव है, इनफैक्ट मीडिया का पर्सपेक्टिव, मीडिया ट्रायल भी चल रहा है इस पिक्चर के अंदर। जो भी आजकल आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में हो रहा है इंडस्ट्री वालों के साथ या मीडिया में जो हो रहा है, पब्लिक का परसेप्शन, सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। सो वल्नरेबिलिटी दिखाई गई है एक सुपरस्टार की, अगर एक सिचुएशन में फंस जाता है, वहां से ये लाइनें आती है कि मैं असली जिंदगी में लड़ना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, लड़ना मेरा शौक नहीं है, काम ही है सिर्फ। और Hmm. पहली वाली में चीज, क्योंकि सुपरस्टार एक आइसोलेशन, एक बबल में रहते हैं, कि ना कल किसी को जानता था, ना आज किसी को जानता हूं। वो बस अपने आसपास के लोग, इंडस्ट्री के लोग, उन्हीं को जान के रह जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अप्रोचेबल हो नहीं सकते आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल। तो Hmm. ये एक डबल एज सोर्ड हो जाती है एक स्टार की जिंदगी में, जो पहली बार दिखाई गई है शायद पर्दे पर। Right. जयदीप का एक, आई थिंक, बहुत ही कमाल का एक लाइन है कि जो तुम्हारी फिल्में देखने आते हैं, जिसे तुम अपनी कमाई समझ रहे हो, प्यार है हमारा जो हम ही देते हैं अपनी मर्जी से. It is so relatable because we have we have heard this like so many times, in the sense that we have made you the stars and all those things, like as if that stars या actors तो कुछ करते नहीं है. Do you enjoy when the statements are coming from say real life, from maybe like a very very near real life? Do you enjoy that in a way? दिस होल सीन इज सो रिफ्रेशिंग। Hmm. जब जयदीप अलावत का कैरेक्टर बोलता है सुपरस्टार को पकड़ के कि हमने तुम्हें बनाया है, Hmm. हम जो हम बोलेंगे वो तुम करोगे, और अपनी मर्जी से तुम्हें हमें दिया है, हमने दिया है तुम्हें। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो आएगी पब्लिक में, क्योंकि वो पैसा खर्च के आपकी पिक्चरें देखते हैं, वो Hmm. उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन एट द सेम टाइम एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि आपने बहुत मेहनत की यहाँ पहुंचने के लिए, Hmm. आपने अपने आप को मतलब एक हर एक कैरेक्टर में ढाला है, उस तरह की फिल्में चूज की हैं जो पब्लिक तक पहुंच पाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मल्टी पर्सपेक्टिव दिखाया गया है इसके अंदर, एक स्टार का पर्सपेक्टिव है, एक पब्लिक का पर्सपेक्टिव है, तो दोनों लोगों को मजा आएगा देखकर, इंडस्ट्री वालों को भी और बाहर के लोगों को भी। और ये है कि एक बाद बाद में तो पब्लिक पे बात पहुंच जाती है ना कि आपकी पिक्चरें पसंद की जा रही हैं, आपको पसंद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। एक हद तक आप कोशिश कर सकते हैं एक सब्जेक्ट चूज करने की, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी क्राफ्ट से लेकर कितना अर्नेस्ट हैं, कितनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। एंड में तो हाउ इट रीचेस, हाउ इट रेजोनेट्स विद पब्लिक, वो उन पर डिपेंड करता है। राइट. और न्यूज न्यूज एंकर को भी हमने सुना, वो मुझे कुछ ध्यान में आ गया, सलमान कहाँ हैं आप? मुझे कोई ध्यान. अनिरुद्ध कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। आपने ऑडिशंस लिए हैं न्यूज एंकर्स की? नहीं नहीं, अच्छे एक्टर है वो। हाँ, वो मतलब एक एक पर्सपेक्टिव है उस तरफ का भी। हमने ये नहीं बोला है कहीं कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा बायस कभी फिल्म में हमने दिखाया नहीं। एवरी सॉर्ट ऑफ स्टोरी हैज अ लेयर। इफ यू टेल द स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, there will be a layer of the patients also, their families also. Similarly, if you tell the story of a superstar, there will be that layer of the public, the media, because that's the life they live. So it is important for us to cover everything in that sense. So if it's a story of a superstar, yes, that entire angle is there in the film. और जो होता आया है, we are merely a product of the society. So whatever we are seeing, we're just showing. That's pretty much it. Right. No, but I think, many times I think that the stars, the Bollywood, I think it is also used as a distraction. बहुत बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, लेकिन बॉलीवुड को लगता है कि दैट जो ऑब्सेशन है वो थोड़ा सा कुछ एट टाइम्स इट्स टू मच.
ये especially तो media. वो दो बड़ी चीजें हैं हमारे देश में, आप पहले ही भूल चुके हो, क्रिकेट और सिनेमा। ये सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा दिखता है, और इसके बारे में लोगों को बात करके अच्छा लगता है। I've taken a few comments from the YouTube link of the promo. Let's see what people are saying. After a very long time, we are going to witness a very different story in Bollywood history. Hats off to the scriptwriter, director, and very well cast selections, that is actors. Hope from now on we can see some change in Bollywood. आई थिंक चेंज इन बॉलीवुड, हम देखो, कोशिश मेरी ये रहती है कि हर एक ऐसी स्क्रिप्ट से एसोसिएट किया जाए जो बहुत अलग हो, पहला अटेम्प्ट टू हिंदी सिनेमा में। एंड इफ यू हैव कोलैबोरेटर्स लाइक क्रिएटर्स लाइक अनिरुद्ध, आनंद सर, तो फ्रेश आइडियाज के साथ जो काम कर रहे हैं, कोशिश तो यही रहती है। अब 2 घंटे कैसे बांधती है हमारी फिल्म लोगों को, लेट्स सी। एंड हमने अपनी से बहुत अच्छी एक फिल्म बनाई है, एंड लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हमें ऐसा लगा था जब हम लंदन गए थे शूट करने, पहली बार मेरी कोई फिल्म इंडिया के बाहर शूट हुई है। जैसे मैं पहली बार बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं आज तक हरिद्वार के आगे गया नहीं शूट करने यूपी, नॉर्थ इंडिया के। सो दिस वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी आल्सो टू डू अ फिल्म लाइक दिस। बट इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन, it's about the screenplay, about the story, about the quirk which we have in the story. So काफी interesting है। Thank you, Tarun. Anirudh, you'd like to say something about the writing and the direction part of it? The writing is very fresh. It's very new, and in fact, the story itself lent, the room gave the room to the writer also and to all of us to do something new, something exciting. This film, I feel, has everything. It's got a lot of action. It's got a lot of comedy. It's got a lot of thrill. It's very situational. So I'm very excited, as AK said, I'm very excited for everyone to watch this. Who has written the dialogues and the screenplay? The screenplay and dialogues, it's Neeraj Yadav. It's a first-time writer. All right. हम सब फर्स्ट टाइमर है इसके अंदर। Sorry, first. फर्स्ट टाइम राइटर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, मैं फर्स्ट टाइमर एक्शन, और आनंद सर के लिए फर्स्ट टाइम एक्शन। वी ऑल डेब्यूटेंट्स इन दिस वन। No, but I think very good writing. It seems very interesting. Okay, this is Debashish Das. The trailer looks promising. Ayushman always surprises us with his content and choice of scripts, and Jaideep sir has come a long way. His acting from Patalok to this movie. आपने कहा कि that वो बैटमैन के साथ में जोकर का होना बहुत जरूरी है. वो केमिस्ट्री जो है, आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल टू द फिल्म. या एब्सोल्युटली, जब नीरज यादव ने मुझे नरेशन दी थी, और जूम पे ही नरेशन हुई थी, जैसे आपके साथ अभी इंटरव्यू हो रहा है, पहली बार जूम पे आपके साथ हो रहा है, नॉर्मली आप सामने होते हैं हमारे। और मुझे हमेशा लगता है कि ये जो दीवार होती है उससे वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती, लेकिन आपके साथ नहीं पता चल रहा कि वो, अभी भी ऐसा लग रहा है हम आमने सामने बात कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, या कैसे आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से नरेशन भी जैसे नीरज ने दी थी, 2 साल से मैं नरेशन ले रहा था पैंडेमिक में जूम पे, कोई नरेशन मेरे तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन वो नरेशन जो नीरज ने दी थी वो पहुंच पाई थी। सो इट वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी। मतलब ऐसी स्क्रिप्ट मैंने नहीं सुनी थी पहले कभी, एंड इट कीप मी हुक्ड फॉर 2 hours. सो वो बात है स्क्रिप्ट के अंदर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्क्रिप्ट्स। Okay, Anuruddh, how important is casting for a film? Because apart from I think even say Jaideep and Ayushman, of course, even the I think the support star cast that we are seeing, I think they're looking very interesting. Casting is the number one of making a film, because any actor that comes on board completely like changes the character. You have, when you write the film, you have an idea in mind. You've seen the film 10 times in your head before you even go ahead and make it. But as soon as the actor comes on board, the character sort of goes away from you. It becomes his or hers. Suddenly everything changes, everything changes. And it is so beautiful, that process, to let go what you had in your mind, because someone else is coming in to make it better, to give it life, to give the character that was in your mind, to make that person real. So it's such an important part. A well cast film will always do better than a good script which is not cast well. ये जयदीप अलावत की कास्टिंग जो है, हुआ ये था कि जब नरेशन में सुन रहा था, आई कुड ओनली इमेजिन। और ये हुआ था कि ही वाज नॉट अवेलेबल आफ्टर पाताल लोक, ही वाज वेरी बिजी। तो मैंने बोला कि मैं वेट कर लूंगा, मैं डेट्स एडजस्ट कर लूंगा। आई वांट जयदीप अलावत इन द फिल्म, आई कैन नॉट सी एनीवन एल्स, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट परफॉर्मर। मतलब इतना ऐड किया है इस फिल्म के अंदर उन्होंने, कि ये फिल्म को कहां से कहां लेके जाती है, एंड बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। This is Faisal Ali, quirky, funny, unpredictable, finally, and entertainer of
that I'm looking forward to. Great acting. This is Faisal Ali. Thank you, Faisal, for this encouragement. क्योंकि हाँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस स्क्रिप्ट की कोर है. आप जो भी सोच रहे होंगे, मतलब वो स्क्रिप्ट आपसे आगे चलती है. कोशिश यही है. एंड आई होप ट्रेलर आपको पसंद आया तो फिल्म भी आपको पसंद आएगी. This is Abhishek Bahimpati. This guy picks the perfectly entertaining movies and takes them to another level. That is true. I don't know what to say, Abhishek, पर हाँ, ये that's always been the aspiration to do something which is different and commercial at the same time. Commercial in the sense थोड़ी wide हो, लेकिन ये I think अब तक की widest film है मेरी, क्योंकि इसमें कोई though I have done social comedies in the past 10 years, but इसमें कुछ taboo नहीं है जिसपे जो हम address कर रहे हैं, ऐसा कोई message भी नहीं है. It's just pure adrenaline rush, or that's the core of the film. This is Shraddha Kamble. First Andhadhun and now this. Thriller and Ayushman goes hand in hand. This is amazing. श्रद्धा कांबले एक मेरा फैन क्लब भी ये रन करती है, एंड शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र. Oh, okay. Yeah. So thank you for your love, Shraddha. At times, do you wonder that Andhadhun has become such an iconic film? अभी किसी भी एक्टर से अगर आप पूछिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बट इवन अदर देन दैट, अंधाधुन इज वन फिल्म जो कि many people they mention that it's a film that is their favorite. आपको कुछ थोड़ा सा कुछ वो होता है यार कि मतलब how do I better this? Maybe an action hero can better that. I hope एक बेंचमार्क सेट हो जाता है हर एक फिल्म के साथ. I am not the creator of the content, but I can just choose the scripts that I get. But I can confidently say that an action hero is one of those films which will be remembered in my filmography. ये ऐसी फिल्म है जो मेरे लिए बहुत अलग है. और दिस इज ऑल्सो एज ऑफ द सीट लाइक अंदाज़ुन. इसकी स्टोरी बहुत अलग है और उससे ज्यादा इंडियन सेंसिबिलिटीज को लेकर वाइड है. आई नो अंदाज़ुन ने वर्ल्ड वाइड बहुत 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 कमर्शियल बिजनेस किया था. आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 टॉप 10 फिल्मों में से जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने किया था, लेकिन उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी फिल्म के साथ. बट अभी एक्शन हीरो में इट्स वेरी रेलेवेंट राइट नाउ. इट्स वेरी टॉपिकल. आज के दौर की, आज के युग की कहानी 2022 की जो चल रहा है आजकल, वो बहुत रिलेट कर पाएगी पब्लिक इस फिल्म के साथ. दिस इज myth story. That is the YouTube handle. I must say Indian superstars are changing the industry in getting such great talented actors like Ayushman, Khurrana, Rajkumar Rao and Kartik Aaryan. I just love these three people movies. All of their movies have story, perfect element to look forward to for hours and worth our precious time. Loved it. There is this debate that people they're opting for going to cinema halls. You have to give them reason to go to cinema hall now. Otherwise, I think OTT is something that is many actors, and they're realizing it, that you can showcase your films, and it's maybe it's like a better option as well. So in that context, that worth our precious time. So ये एक आपकी छवि बनती जा रही है. शुक्रिया. कोशिश तो यही है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो जहाँ पे लोग घर से निकलकर फिल्म देखने जाए वाली एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है. जैसे मैंने बोला कि इट्स अ पोस्ट पैंडेमिक चॉइस फॉर मी, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने सोचा था ये फिल्म करने के लिए. आई थिंक इट्स अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस फॉर मी ये फिल्म, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी दिखने वाली फिल्म है ये मेरी. और इसमें वो थ्रिल भी है, ठहराव नहीं है इसमें. इट इज दैट फास्ट पेस्ड फिल्म which may work. Most trailers nowadays tell you the complete story, and I figure out if it is worth watching it or not. This one has kept me at the edge of my seat. Anirudh, you'd like to take this first? That was tough. We tried about 7-8 trailers. Because in a thriller, it's very difficult. How much do you give out? You've got 2.5 minutes to to sell a story, but not to tell the story. So you have to sell it. You can't give out too much at the same time. You can't hold too much, back also. So it was very difficult to get the right trailer out. I'm very glad that this comment has come, because this is what we were actually aiming for. We were hoping that we'd achieve this.
So thank you so much. Fantastic. So Ayushman and Anirudh, thank you very much for your time and congratulations for the fantastic promo and all the best wishes for the film. I'm sure that it's going to be a huge success. Thank you so much. Thank you, bhai. Thank you so much. Thank you. An action hero in one word. Story Unforgettable. is very interesting. Okay, who's your all-time favorite action hero in India? AKshay Kumar. He started it, and the contemporaries it's Tiger Shroff because उनके जैसा action कोई कर नहीं सकता. And apparently Akshay sir is there in the film as well. ये एक देखते हैं पिक्चर देखकर बात करते हैं. अभी हमने कुछ बताया नहीं है. Rumors are floating. Someone told me also. पता तो हो ही चला. लोग तो कह रहे. How difficult is it playing an actor in a film? You know, it's exciting because मैंने ऐसा एक्टर कभी प्ले नहीं किया, मतलब वैसे एक्टर प्ले नहीं किया किसी फिल्म के अंदर, but I'm playing a superstar who's very arrogant, who's flamboyant, who wears stardom up his sleeve. वो मैं हूँ नहीं, तो मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है ये कैरेक्टर. So it was fun playing a character who's just not like me. So being somebody else is a lot of fun as an actor. So it's fun playing an actor. आपको पता है कि मेकअप दादा को बुलाना है, क्या करना है, एंड यू नो द जार्गन. समटाइम वो जार्गन यूज करते हैं फिल्म के अंदर. सो वो it's not that difficult, of course, because you've gone through that drill. That's your life. If you could teleport, where would you go and why? I would like to go to Japan. कभी गया नहीं वहां पर, and I find that country very, very, very interesting. Recently in the football World Cup match, किसी और का Yeah, match. they're so nice यार. क्या लोग हैं वहां के, सब वहां पे क्लीन कर रहे हैं. वहां का कल्चर ही कमाल है. Nora Fatehi in a hashtag. Hot and talented. Doing a dance film is an option for you now? Absolutely. If I get like more number of days for rehearsals, पहली बार मुझे rehearse करने का मौका मिला है in an action hero. नहीं तो मैं हमेशा 2 दिन या 1 दिन की rehearsals में कर लेता था. But जब से पता चला नोरा फतेही साथ में करने वाली है डांस, तो I took my good 7 days to rehearse, and I think it worked pretty well. I'm liking all the appreciation. किसी ने मुझे डांस करते हुए ऐसे देखा नहीं था. But मैं बताना चाहता हूँ till 5th or 7th, till my 7th standard, I used to dance. मतलब I used to emulate Michael Jackson and moonwalk करता था. And suddenly from there I switched to music and theatre. तो डांस को थोड़ा सा तवज्जो देना कम कर दिया था मैंने. But since I have a sense of rhythm, so I worked towards it. I tried. Writing a film or directing a film, which one do you think will come first? I think directing a film or producing a film to begin. I think he'll be a great director also. Yeah, I think so. And why do you say And that? he'll be a great actor also. And why do you say that, Anirudh? He's got such good understanding of the scene, and he doesn't think about himself when he's standing in the scene, in the location. He doesn't think about his character or himself. He always thinks about the other characters. He always talks about how much more important it is for the other person to take the limelight right now, because this is. So he directs, like, he understands mise en scène. He understands who should be standing. He understands when he should take a back seat. He understands when he should take charge. So that, I think, it's a very directorial quality. It's usually with actors, it's not that that's not the approach actors generally take. But he thinks more for the film and less for himself. Ayushman, one line subject, script narration, or reading a script. What is your preference? Reading a script. One line में काफी फिल्में ऐसा होती है, one line में अच्छा साउंड करती है. 2 घंटा कैसे आप ऑडियंस को बांध के रखते हैं, that's the real challenge. So reading a script, I think, gives you everything. Narration भी, if like the director is there and he's giving the narration or he's part of the writing process, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. Okay, you are a genuinely nice guy within the industry. Everyone has to say that. But over the years, how important is it for you to say no to certain maybe offers, certain projects? I've learned how to say no. मतलब मेरा ये मानना है कि पहले मैं काफी डिले कर देता था because I have to get really conscious कि मैं ना कैसे करूँ. But it's better to say no. नहीं तो आप उनको dilly dallying करते रहेंगे. You just keep on delaying everything. So it's better to be just honest.